When I was paralyzed, my world broke. I realized how alone I am. ये तो कुछ नहीं है, शर्मा जी के बच्चे को देखो. So this is actually real, considering an artist and his art. The first drawback is not having a supportive family. When we talk about childhood, and especially about me, I feel it was all about hardships. No matter how much you fall down, no matter how many times failure hits you, you only lose when you give up. 5th August 2017, right before my World Champs, I was shooting in Bangalore where I fell on my neck directly on a trampoline and I broke my cervical from C1 to C7. जब वो मेरे साथ हादसा हुआ ना, instead of fear gripping in, मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज जो आई वो थी कि ठीक होऊंगा और मैं फिर से मारूंगा. So when that happened, it really destroyed my life in some way. As my personality is what I feel, the search for perfection leads to evolution. तो definitely ऐसी कुछ चीज़ try कर रहा था जो out of the box थी. तो mishaps तो होते रहते हैं. As you see, it's already 10 AM with scorching heat. The kids are already there playing. मज़ा आने वाला है because I get my whole inspiration from the kids, you know. जब मैं छोटा था, the way, the hunger I had, I'm gonna get that energy from them. Buy shoes हो, नहीं हो, चप्पल हो, all you need is a ball. No matter how much you fall down, no matter how many times failure hits you, you only lose when you give up. तब मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं था, तब like you know I did not even have a mediclaim. तभी दिमाग में नेगेटिव ख्याल्स भी आते थे कि सब कहते थे यार ये सब करके कुछ फायदा नहीं है, this won't take you anywhere. I think our parents are definitely a big result of their own societal pressure. So imagine like you know मैं कुछ ऐसी चीज़ कर रहा हूँ जो काफ़ी अनकन्वेंशनल है. तो फर्स्टली दे आर नॉट एबल टू कॉन्फिगर इट इन देयर माइंड. व्हेन आई एम कमिंग ऑन टीवी आई एम द हीरो. ओ आर्ची टीवी पे आया, मेरा बेटा टीवी पे आया. बट ड्यूरिंग द डार्कर डेज व्हेन दिस गाय इज जस्ट ट्रेनिंग, देयर इज नो सपोर्ट. ये तो कुछ नहीं है, शर्मा जी के बच्चे को देखो. सो दिस इज एक्चुअली रियल, considering an artist and his art. The first drawback is not having a supportive family. Hey guys, my name is Achis Patil. I'm 36 years old and I'm a professional football freestyler and a full-time athlete. Well, if you talk about hardships, I think it's in the blood. जब मैं ऐसा बोलता हूँ ना, I just remember all the times people said no to me. ये मत कर, वो मत कर, ये अच्छा नहीं है. Like no, 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 हर जगह से no. घर वाले बोल रहे थे क्या कर रहा है, सर्कस है. बाहर वाले लोग बोल रहे थे ये स्किल्स तो तुम फुटबॉल में यूज़ नहीं कर सकते. So slowly, this circus started becoming an Olympic sport in my mind. As long as I'm not doing anything wrong or I'm not harming anyone, मैं तो भाई मस्त जी रहा हूँ. It's been 2-3 hours. I'm training. I'm following my passion. I'm drenched in sweat. It is my life. I'm loving it. A human needs a heartbeat and football is my heartbeat. But football में तो growth नहीं है because no matter how talented you are, your skill is not recognized because there are other people with a lot of more influence. So I decided I want to do something and that's when I came up with football freestyle. इसमें ना, if you're good at it, you get recognized, and if you're not good at it and someone else is better, it's simple, you work hard. It doesn't matter whether you come from a rich background or a poor background or a political background. So एक clear transparency था ये sport में. And today I'm the 2 times Indian Pana champion. I'm representing India in the last 14 years. Something that teamwork did not give me, I did it by myself. I've performed all over the world. भाई फुटबॉल फ्रीस्टाइल की वजह से मेरे 4 पासपोर्ट भर गए हैं. मतलब कुछ किया नहीं था लाइफ में, बट जब चांस मिला बता दिया. फर्स्ट सेशन सुबह का हो गया है, स्ट्रीट सॉकर था. बहुत ज़्यादा गर्मी थी, गीला हो गया था, टी शर्ट कैरी किया, बैग में सब कुछ रखा है, ऑलवेज रेडी फॉर इट. मुंबई की गर्मी है भाई. अभी आफ्टरनून हो गया है, इट्स टाइम टू हैव नाइस लंच एंड रेस्ट फॉर अ बिट, और फिर शाम को हम हमारी दूसरी ट्रेनिंग करेंगे. व्हेन योर लव्ड वंस ऑल्सो गो अगेंस्ट यू, दैट्स व्हेन यू रियलाइज व्हाट यू एक्चुअली हैव लॉस्ट इन लाइफ. बट फिकर नॉट, मेरे पास एक हुकुम का इक्का था और वो था माई बेबी, माई चाइल्ड जॉर्डन. तो शाम तो हमारी बीच पे रहती है हमारे प्यारे जॉर्डन के साथ. जॉर्डन इज माई डॉग, ही इज लाइक माई सन. Everyone has their purpose and priority in life. But today I am doing exactly what I want to do and I'm so happy and I'm earning through my passion. Freestyler हूँ तो क्या हुआ? On my talent,
Or in fact, on anyone's talent, people can achieve whatever you want.